Hello kids, welcome back to our English class. So today we will study English Reader Class 2, Chapter 8. The Three Tortoises. Learning objectives, enjoying a picnic with the family, understanding that promises are meant to be kept. तो हम क्या जानेंगे इस चैप्टर में कि अपनी फैमिली के साथ हम कैसे पिकनिक को एंजॉय करते हैं एंड अंडरस्टैंडिंग दैट promises आर meant टू बी kept. और हम ये समझेंगे कि promises यानी हम किसी से कोई वादा करते हैं तो हमें वो निभाना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए. Warm up. Picnic word search. So kids, here you can see a puzzle and you will find some words which is related to picnic. For example, juice. So you will circle that word. These are the words given. You have to find in the puzzle and circle them out. In this picture, you can see the three tortoises. They are preparing for the picnic. There lived three tortoises, Papa tortoise, Mama tortoise and baby tortoise in a tiny house of a city. One fine day, Papa tortoise said, "Let's go for a picnic. I hear there is a beautiful lake in Hyderabad called the Hussain Sagar Lake." "What a fine idea!" shouted baby tortoise. तो एक बार की बात है, तीन टॉर्टॉइस, पापा टॉर्टॉइस, मम्मा टॉर्टॉइस और बेबी टॉर्टॉइस एक साथ रहते थे. कहाँ पे? एक बड़ी सी सिटी में रहते थे, एक छोटे से घर में. तो एक बार पापा ने क्या किया? पापा ने कहा कि चलो चलते हैं पिकनिक पे. और बेबी टॉर्टॉइस ये सुन के बहुत ही ज्यादा खुश हो गया. "Hooray!" shouted baby tortoise. "Let's go at once." The three tortoises made some chapatis and some tasty chutney. They packed the food into two small picnic baskets. तो उसके बाद वो तीनों ही लोग क्या होते हैं? रेडी हो जाते हैं जाने के लिए. और पिकनिक पे जाने के लिए वो चपातीज और चटनी को बनाते हैं और दो बास्केट्स में पैक करते हैं. "Come along, baby," she shouted. "It's time to go. Where are you?" "I'm in the kitchen, Mama," he replied. "Well, bring the picnic baskets and hurry up," said Mama Tortoise. "We have got a long way to go." उसके बाद ममा टॉर्टॉइस बेबी टॉर्टॉइस को कहती है कि पिकनिक बास्केट्स को ले लेना अपने साथ, हमें बहुत दूर जाना है. Baby tortoise picked up a picnic basket and rushed out of the kitchen. They walked and walked and walked. After about 5 months, at 5 o'clock one morning, the tortoise family stopped for a rest. उसके बाद वो लोग पिकनिक के लिए निकल पड़े और वो चलते रहे और ठीक 5 महीने बाद वो एक सुबह 5 बजे एक जगह पे रेस्ट करने के लिए रुके, आराम करने के लिए रुके. After another 5 months, they finally arrived at the Hussain Sagar Lake. और उसके बाद वो 5 महीने और चले और उसके बाद फाइनली वो कहाँ पहुंचे? हुसैन सागर लेक, जहाँ पे उन्हें पिकनिक मनाना था. "Oh, how beautiful it is!" exclaimed Papa Tortoise. Baby Tortoise found some small stones and began to throw them into the water. But after a while, he became bored with this game. तो उसके बाद वो लोग वहाँ पे पहुँच के बहुत ही खुश हुए और बेबी टॉर्टॉइस को वहाँ पे कुछ पत्थर मिले जिन्हें वो नदी में फेंक रहा था, लेकिन बहुत जल्द वो बोर हो गया. "Let's have our picnic lunch now," he said. "I am hungry." Papa Tortoise spread the blanket over the grass. Mama Tortoise began to unpack the lunch. Suddenly, Mama Tortoise gave out a long wail. "Oh no," she cried. "Baby Tortoise, I asked you to bring the picnic baskets, but you only brought one. Why did you not bring the chutney?" "I had some nuts in one hand," said baby tortoise. "I didn't see the other." तो उसके बाद वो फाइनली क्या करते हैं? खाने का प्रोग्राम बनाते हैं कि अब हम लोगों को भूख लग रही है और हम खाएंगे. तो इसके बाद ममा टॉर्टॉइस देखती है कि उनके पास एक ही बास्केट है जिसमें कि चपातीज हैं. चटनी वाला बास्केट तो वो लाना ही भूल गए. तो ममा टॉर्टॉइस जो है वो बेबी टॉर्टॉइस को बोलती है कि तुम क्यों नहीं लेके आए. तो बेबी टॉर्टॉइस कहता है कि मैंने दूसरी बास्केट देखी नहीं, मैंने तो सिर्फ एक ही बास्केट देखी. He didn't finish the sentence but burst into tears. "No, no," said Papa Tortoise. "Don't cry. Run back to the house and fetch the chutney."
You forgot to bring it, so you must fetch it. Baby tortoise dried his eyes. All right, he said, I'll go, but promise not to eat up the chapatis while I am away. Papa and Mama tortoise promised. उसके बाद बेबी टॉर्टॉइस रोने लगता है, लेकिन पापा टॉर्टॉइस उसे कहते हैं कि रोने वाली कोई बात नहीं है, तुम चटनी भूल गए हो, लेकिन अब तुम जल्दी से जाओ और चटनी लेकर आ जाओ। उसके बाद बेबी टॉर्टॉइस जाने के लिए रेडी होता है और वो कहता है कि आप प्रॉमिस करो कि आप दोनों मेरे बगैर चपातीस नहीं खाओगे। The baby tortoise went off to fetch the chutney. Papa tortoise lay back on the grass and nodded off. Mama tortoise put on her spectacles and studied the flowers nearby. बेबी टॉर्टॉइस के जाने के बाद पापा टॉर्टॉइस वहीं घास में लेट जाते हैं और ममा टॉर्टॉइस अपने स्पेक्टिकल्स लगा के वहां पे फ्लावर्स को देखने लग जाती हैं। An hour passed and then a day. The weeks passed and a month went by. The months became a year. Baby tortoise did not return. Papa tortoise said, I'm feeling a little hungry. Do you think we can have a nibble at one of the chapatis? So, उसके बाद जब बेबी टॉर्टॉइस गया तो बहुत दिन बीत गए, दिन बीते, महीने बीते और साल भी बीत गए, लेकिन बेबी टॉर्टॉइस वापस नहीं आया। तो उसके बाद पापा टॉर्टॉइस कहते हैं कि मुझे भूख लगी है, क्यों ना हम एक चपाती खा लें। Mama tortoise opened the picnic basket and began to take out a chapati. Just then they heard a loud shout. They looked up to see baby tortoise coming out from behind a large bush. Ah, cried baby tortoise. As he came near, I knew you would cheat. It's good thing that I didn't go home for the chutney. I knew you would eat the chapatis when I was not here. तो उसके बाद क्या होता है, ममा टॉर्टॉइस चपातीस निकालती है खाने के लिए, पर इतने में उन्हें बुश यानी झाड़ियों में से कुछ आवाज सुनाई देती है और वहां से बेबी टॉर्टॉइस चिल्लाते हुए निकलता है कि मुझे पता था कि जब मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा आप मुझे चीट करेंगे और चपातीस खा जाएंगे, इसलिए मैं गया ही नहीं। फाइंड मीनिंग। टाइनी, वेरी स्मॉल। फेच, गो एंड ब्रिंग। बास्केट्स, a type of boxes with a lid. Exercises. Creative expression. Tell your story. Have you ever been to a picnic? How was your experience? Did you like it? Where did you go? Share your experience with your classmate. So kids, इसमें आपको क्या करना है, आप अपनी स्टोरी शेयर करेंगे अपने क्लासमेट को, अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। जब आप पिकनिक पे गए तो आपने वहाँ पे कैसे फन किया, क्या अपने एक्सपीरियंस किया, यू विल डिस्कस विद योर क्लासमेट। क्रॉस करिकुलर कनेक्ट। लर्निंग बाय डूइंग। Your teacher will arrange a cooking class where she will ask you to prepare the chutney of your choice. With the help of your teacher, try to make chutney of different items like mango, coriander, mint, etc. So this is your class activity. You will make chutney or different kind of chutney with the help of your class teacher. Critical thinking. Let's play a game. We go to picnics for fun with our family. We bring many different items with us to the picnic spot. Choose the items that are used on a picnic from the given sets of pictures and write the chosen picture name. Do we use baskets on picnics? Yes. Do we use spoon and plates on picnic? Yes. Do we use umbrella? Yes. Do we use bed? No. Do we bring bear with us? Yes. Do we use train? No. Do we use blanket? Yes. Do we use water bottle? Yes. Do we use chair? No. Logical decision making. Imagine if you were in the place of the baby tortoise and forgot to bring the chutney basket. What would you do? How would you react? Would you act the same way as the story's character, the baby tortoise? So, इस पे आपको क्या करना है, आपको इमेजिन करना है कि अगर आप बेबी टॉर्टॉइस की जगह होते तो आप कैसे रिएक्ट करते। अगर आपके पास ये सिचुएशन आती, आप चटनी भूल जाते, तो आप कैसे रिएक्ट करते? क्या बेबी टॉर्टॉइस की तरह शाउट करते या कुछ और करते? सो यू विल डिस्क्राइब दिस आंसर इन योर ओन वर्ड्स। एक्सरसाइज टाइम।
A. Answer the following questions. A. Where did the tortoise live? The tortoise lived in a big city in a small house. B. Who gave the idea of going for a picnic? Papa Tortoise gave the idea of going for a picnic. C. What did the tortoises take to eat on the picnic? The tortoises take chutney and chapatis to eat on the picnic. D. How long did the tortoises take to reach the Hussain Sagar Lake? The tortoises take 10 months to reach the Hussain Sagar Lake. E. What did Papa and Mama Tortoise promise? Papa and Mama Tortoise promise that they will not eat chapatis without baby tortoise. B. Find their meanings. A. Nodded, shaking. B. Promised, pledge or seal. C. Spectacles, eyeglasses. D. Flowers, garden stuff. E. Bush, shrub. F. Written, come back. C. Fill in the blanks with the correct words. A. The family had 3 members dash, dash and dash. Papa Tortoise, Mama Tortoise, and baby tortoise. B. They arrived at Hussain Sagar Lake. C. Mama Tortoise put on her dash and dash the flowers nearby, spectacles and studied. D. Take the right options. A. The tortoise lived a long way from Hussain Sagar Lake. True. B. The tortoise family lived in a big house. False. C. Hussain Sagar Lake is in Delhi. False. B. Baby tortoise picked up both the picnic baskets. False. E. Match the following. Column A, column B. A. Beautiful. Lake. B. Good. Idea. C. Hurry up. D. Loud. Shout. Conceptual understanding. Write a poem about the family. Show how much you love them. Also take a picture of your family. So kids, in this question, you will write a short poem about the family and also click a picture of your family. Communication. Writing skills. What did the tortoise family do next? Talk about what might have happened. Write about it and draw a picture. So इसमें आपको क्या करना है? आपको इमेजिन करना है कि टॉर्टोइस की फैमिली ने इसके बाद क्या किया होगा. आप इमेजिन करेंगे और एक इमेजिनरी यहाँ पे पिक्चर भी बनाएंगे और यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे अपने वर्ड्स में कि उन्होंने आखिरकार किया क्या होगा. Listening and speaking skills. Take turns to ask and answer questions about a picnic. You may ask these questions. So kids, you will answer these questions by yourself
A. Which place did you choose as your picnic spot? So you will write the place which you choose as your picnic spot. Who else went with you? C. How was the weather? D. What did you do there? E. What would you like to remember about the picnic? U. One day we went to the hillside. Partner, who went with you? So kids, इसमें आपको करना क्या है, आप ये questions अपने friend से भी करेंगे और आपकी friend भी आपसे करेंगे. Then you will answer these questions. So here your chapter is finished. See you in next class.